Become the next Indian soap star with O2. I want to be an Indian star, soap star. I want a change in my life. No. You listen to me, bete. How can I let you marry this boy? I'm your father, no? All I want is the best for you. No, he's not the best. How will he take care of you when we're not here? I need to know that you always be okay, that you will have everything you deserve, everything you should have. Huh, that's not a good job. You are so educated, you could have anyone, someone more suitable, someone who is of your standard. He's not good enough. You have worked so hard. Why would you settle for someone like him? Oh, bete, please try to understand from my point of view. How can I sleep at night, knowing I have failed in my duty as a father? It's my responsibility to do what is right for you. This is a very big decision, bete. It is something that affects us, you all, we all, not just you. Your mother is shocked, your grandmother is upset. How can this be right? Of course, I want you to be happy, but this will not work out in the end, I'm telling you. Love, that's not everything. A marriage cannot survive on love alone. Trust me, I have been married for almost 30 years. I know. Please, Devi. Hello? Devi, hello? Oh. No, it's a good experience. It's a good experience. Well, I want to be an Indian soap star, as I said before, because I've just graduated in a degree in performing arts. I love acting, love presenting, work for the radio station, doing loads of things, and this will be so great for my experience, for me to further my career as us young graduate students are out there in that world of unemployment. So hi, that's why. And I love acting so much. Oh God, it didn't go so well. I knew this would happen. They're just so stubborn. Oh, it just makes me so angry. They're such hypocrites. You know, they say that they want me to be so happy, but obviously not, that's not true. If they would, then they'd just let us get married, wouldn't they? They would not stand in our way like this. They might not even be happy for me. For us. I just don't know what to do. I don't know. I need to think about it. I know what you mean, but I just don't think that they'll listen anymore. I'm not in the mood that they're in right now. There's no getting through to them. They've already made their minds up. Nothing you say can make a difference, unfortunately, and I know them. I know what they're like, that's the thing. We can't change their minds at all. I think we're just gonna have to wait. I hope they can see how much I really, really want this. I really, really, really do want this. And yeah, maybe you're right. I suppose it's worth a try, I guess. There's nothing left to lose now, is there? I've already hurt them, and that was the last thing that I wanted to do, wasn't it? But what choice did I have? I could not go on deceiving them, lying to them, letting them think that I want to marry that man because I don't. Okay, do it. I'm so scared, you don't understand. I know who'll be. Just please listen, okay? Just call me straight back after, okay? Okay, good luck. All right, bye. Hi.
Oh, me, yes. Hello, I'm meant to talk here. Well, I did feel emotional this time and I did feel like I was going to cry, but then I just thought for that split second I've got to go back to work, and when my mascara runs, I don't have any spare. No, I did think it went a bit better. I wish I'd learnt the script again, but obviously I didn't. So, but I think it went a little, I felt more like I meant what I was saying. Because basically I'm from Asia and then I can do it. Yeah, I'm really good at it, so I can do it. Hello, Smita beta. बेटा कहाँ हो? घर आ जाओ. ये जो भी आपने किया अच्छा नहीं किया. अभी आपको लग रहा है कि आपने अच्छा किया, लेकिन हम आपके माँ बाप हैं, हम आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे. ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप अपने आप को देखो. आपने इतनी अच्छी एजुकेशन ली है और इसके बाद आपके पास इतना टैलेंट है, तो आप उस लड़के के पास क्यों जा रही हो जिसके पास कुछ भी नहीं है? और मैंने शादी की है, मुझे भी 30 साल हो गए हैं. मुझे पता है कि ये सारा कुछ कैसा होता है. आप अभी छोटी हो, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मेरी बेइज्जती है, आपकी बेइज्जती है और हमारी पूरी फैमिली की बेइज्जती है. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना आप. देखो, सब कुछ जो होता है आप जो करते हो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके बड़े जो कुछ भी आपको बताते हैं वो आपके लिए अच्छाई के लिए होता है. तो आपने क्या डिसाइड किया है? वो आपके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता ना. जो आपको हमें नहीं आके मिला और आपको लेके चला गया और आप भी उसके साथ चले गए. हमने आपको पाला बड़ा किया, इतने सालों के बाद आप उस बंदे के लिए भाग के चले गए जो आपको 6 मंथ के लिए मिला और आप उसके साथ चले गए. हेलो हेलो Samita? I really feel proud of myself that I've done it, and then I've done it quite well. And yeah, I was really confident, that's the thing. And then made it natural. That's it. I just would like to go onto the TV, so can become famous if people like me. Yeah. हे भगवान, ये सब अच्छा नहीं हुआ. मुझे नहीं पता था कि वे ऐसा ही करेंगे. वो बहुत ज़िद्दी हैं. कसम से मुझे बहुत गुस्सा आता है. वो बहुत पाखंडी हैं. वे सोचते हैं कि वो मुझे खुश रखेंगे, पर ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता राज, तो वो हमारी शादी होने देते. वो हमारे बीच खड़े नहीं होते. मुझे नहीं लगता कि इस बारे में सोचना पड़ेगा. मुझे पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे. जब कभी भी कोई वो निर्णय ले लेते हैं, वो अपने विचार नहीं बदलते. मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए. हाँ, शायद तुम ठीक हो. हमें कोशिश करनी चाहिए. अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा. उनके सोचने दो कि मैं उस आदमी से ही शादी करूँगी. हाँ, ओके, ऐसा ही करो. मुझे डर लग रहा है. मुझे नहीं पता वो कैसा होगा. मुझसे बाद में बात करना. ओके, बाय. I just did it. I don't know. I just tried to put my emotions according to the character. Yeah, that's about it. Let's see. I mean, it will be very great to be a part of such a famous this program, and I mean, many people like this program, watch this, so it will be really grateful to be part of this program. Yeah. हे भगवान, ये सब अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेंगे. वो बहुत ज़िद्दी हैं. कसम से मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा है. वो बहुत पाखंडी हैं. वो कहते हैं कि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है. अगर ऐसा होता तो वो हमारी शादी होने देते. वो इस तरह हमारे बीच में नहीं खड़े होते. वो मेरे लिए, हमारे लिए खुश हो रहे होते. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. मुझे नहीं पता. मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा. मुझे पता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे. इस मूड में तो बिल्कुल भी नहीं जिसमें वो इस समय हैं. उनसे पार पाने का मुझे सचमुच कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा.
वे हमेशा अपना निर्णय ऐसे ही कर लेते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम क्या कहोगे। तो मैं जानती हूँ उन्हें, मैं जानती हूँ कि वो कैसे हैं। हम उनका विचार नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। उम्मीद है कि वो देख सकी कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक हो। मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं उन्हें पहले ही दुख पहुंचा चुकी हूँ और मेरे करने लायक वह बस आखिरी ही चीज़ थी। लेकिन मेरे लिए और रास्ता भी क्या था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। उनको सोचने दो कि मैं उस आदमी के साथ खुश रहूँगी। ओके, ऐसा ही करो। मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि वह कैसा होगा। मुझसे बाद में बात करना। शुभकामनाएं, बाय। Yeah, it went well, yeah. It was a good script to feel, yeah, that you're talking to your boyfriend and parents are denying. Yeah, it's a good situation. Yeah. Become the next Indian soap star with O2.